Hello students, welcome to Europe Education. I am Jitendra Tyagi. As all of you know that Europe Education has launched a book. This is the book, okay, this is available for all branches, mechanical, electrical, civil, electronics and communication, computer science, okay. So this book contains questions from different NPTEL assignments available freely on the different websites of NPTEL, and all these important questions relevant for GATE exam have been collected, okay, and compiled in a book. So this is a very good source for your preparation for GATE exam, right? Now in this lecture I am going to solve one important problem from calculus, okay. You know, calculus is very important for many branches in GATE exam, and we get questions from calculus in GATE exam, okay. So in this book we have two chapters of calculus, chapter 1, chapter 2. This question is from vector calculus. So let us see what is the question and in which chapter it is available, okay. So this is question number 25 from chapter कैलकुलस, ओके. चैप्टर का नेम है कैलकुलस 2, ओके. कैलकुलस के दो चैप्टर्स हैं, उसमें कैलकुलस 2 से क्वेश्चन नंबर 25 ये लिया गया है. सो दिस इज फ्रॉम एनपीटीएल एंड same type of questions we have seen in GATE exam also during last years in different branches, okay, where this vector calculus is in the syllabus. So we have found many questions from vector calculus, right? So definitely NPTEL assignments are very useful for your GATE preparation. You should use them, okay, for your GATE preparation, right? Now if we talk about this particular question, the volume of the solid generated by revolving the plane area bounded by y square equal to x and x equal to 1 about the line x equal to 1, right? So in this topic we have one method known as cylindrical disc method, okay, and we have area, some finite area, like we have this area, okay, we have say this area. Now we rotate or revolve this area about one axis which is part of the boundary of the area, okay. We revolve this region, this area, okay, इस area को हम revolve करते हैं about the axis, and that axis is on the boundary, it is part of the boundary of the area, okay. So if we revolve this around this, we get a region in 3-dimensional space that makes some volume. So that volume is to be computed, okay. जैसे आपके पास कोई भी एक पेज है, जैसे ये हमने एक पेपर लिया, ठीक है, ये वाला एक पेपर है. अब इसका जो एरिया है उसको अगर मैं इसको एक्सेस मान के, इस बाउंड्री को एक्सेस मान के इसके अबाउट रिवॉल्व करता हूं, तो जितना भी रीजन इसके अंदर कवर होता जाएगा एक सिलिंड्रिकल फॉर्म बनेगी ना, सिलेंडर की तरह जैसा बनेगा. सो दैट वॉल्यूम वी हैव टू कंप्यूट, राइट? So now we have different cases also. If we talk about different cases, so there are two important cases. One is, suppose this is our x axis, okay, this is x axis, and we have a curve, say y equal to fx, this is y equal to fx, and this is line x equal to a, and this is line x equal to b, okay. Now we have this shaded area, this one, this is the shaded region, finite area. Now we revolve this area about this x axis, suppose, okay. So we can see x axis is the part of the boundary. We revolve this area about this x axis, some space in 3D is covered whose volume is to be computed right now, okay. So we use cylindrical disc method here. So what is the approach which we use? Let us discuss that approach. Suppose this is our y axis, this is y axis, this is origin. So now at a distance of x axis from this origin, okay, at a distance of x from this origin, we assume a disc, cylindrical disc, okay. यहाँ पे एक डिस्क एज्यूम करेंगे हम, या हम एक रेक्टेंगल फॉर्म मान के चलते हैं ये,
और इस रिक्टेंगल को, ये रिक्टेंगल जो है यहाँ पे, ठीक है ना, इसको रिवॉल्व करेंगे हम, इतनी एरिया को इसको रिवॉल्व करेंगे, ठीक है, एक डिस्क जैसा बनेगा, सिलिंड्रिकल डिस्क जैसा अबाउट द एक्स एक्सिस। ओके, सो जो रेडियस बनेगा डिस्क का, ये रेडियस, दैट इज द वाई कोऑर्डिनेट हियर। एक्चुअली सिंपल वे में इसको वाई कोऑर्डिनेट मानेंगे ना ये, और जो इसका विद बनेगा दैट इज डी एक्स, बिकॉज इट इज ऑन द एक्स एक्सिस, so any very extremely small part of the x axis can be taken as dx. So in simple words, so this is dx. So what is the volume of this disk? It is pi r square h. So pi y square dx. We know the formula for volume of the cylinder, that is pi r square h. So r is what? This y जो radius बनेगा, ठीक है ना, और what is the h? It is dx, जो width बन रहा है यहाँ पे डिस्क का, right? dx, क्योंकि ये x एक्सिस के ऊपर लिया है। इफ वी टेक इट ऑन y एक्सिस वी कैन टेक इट dy. ओके, नाउ दिस वॉल्यूम इज ऑफ वन डिस्क. नाउ देयर कैन बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सच डिस्क, ओके, फ्रॉम x इक्वल टू a to x इक्वल टू v. If we add the volumes of all such disk, we get the entire volume. Okay, now since we have infinite quantities to be added, we need integration. So here we integrate this from x equal to a to x equal to b. Okay, now this y is equal to fx, so this is equal to x equal to a, x equal to b, and pi or y square means fx whole square or dx. So if we evaluate this definite integral, we will get the volume of the region generated, right? Now similarly we can revolve this about y axis also, that may be the part of the boundary also. Okay, but in the particular question, okay, I have given you idea about how to solve this type of problems using the cylindrical disk method. Now come to the particular problem which we have taken from NPTEL. Okay, so problem is a little different. So this one is the problem. Okay, so now I am going to explain the solution of this problem. We have y square equal to x curve. This is our x axis, and we know that y square equal to x is a parabola of the form y square equal to 4ax. Okay, so this is like this one, and x equal to 1. So suppose this is x equal to 1. So this is the area bounded. Okay, ये जो area है इसके अंदर पूरा, this is the bounded area, this one, and this is to be revolved about the line x equal to 1. So this is x equal to 1. Okay, so इसको x equal to 1 के about revolve करना है हमें. So x equal to 1 जो है हमारी एक्सेस हुई रोटेशन की, और वो बाउंड्री का पार्ट है. We can see that it is the boundary. Okay, अगर ये बाउंड्री है, so cylindrical disk method will work well. तो सिलिंड्रिकल डिस्क कैसे मानेंगे? यहां पे हम एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप एज्यूम करते हैं इस तरीके से. अब देखो यहां पे ये जो ओरिजिन है, और ओरिजिन से x डिस्टेंस पे एक पॉइंट हमने लिया है, ये वाला, ये, ठीक है ना, दिस इज एट ए डिस्टेंस ऑफ x, और वहां तक की ये हाइट है इसकी, जो हमने ये रेक्टेंगल लिया है इस डायरेक्शन में ऐसे. ओके, तो ओरिजिन से x डिस्टेंस पे हमने ये एक एलिमेंट लिया है पॉइंट, यहां पे ये हाइट बन रही है हमारी, रेक्टेंगल इस तरीके से बन रहा है, उसकी लेंथ बोल सकते हैं इसको हम. ओके, नाउ इफ वी रिवॉल्व दिस रेक्टेंगल, इसको अगर हम रिवॉल्व करें, दोनों साइड में जाएगा, इधर भी जाएगा ये, तो एक वॉल्यूम बनाएगा डिस्क के अंदर. ठीक है, ये डिस्क के अंदर वॉल्यूम बनाएगा. टोटल डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू दिस पॉइंट इज 1 एंड दिस इज x. सो रेडियस ऑफ दिस सिलिंड्रिकल डिस्क, इसकी जो रेडियस बनेगी सिलिंड्रिकल डिस्क की, दैट विल बी व्हाट? दैट विल बी 1 minus x. So radius is equal to 1 minus x. And what is the height? h equal to, it is dy, because ये y axis के पैरेलल में लाइन है, इसके ऊपर कोई भी हम एलिमेंट लेंगे स्मॉल विद का, तो dy उसको लेंगे. ओके, सो h is equal to dy. सो वॉल्यूम ऑफ द डिस्क, यहां पे जो डिस्क बनेगी इस तरीके से ऐसे, ये, ठीक है, इसके अंदर जो वॉल्यूम कवर होगा, दैट विल बी पाई आर स्क्वायर. सो पाई 1 minus x whole square into dy. Okay, now x is what? X is
equal to y square. It is given x is equal to y square. So we can put y square here. So pi into 1 minus y square, its whole square dy. Now this is the volume of the one disk. Okay, we have infinite such disk. यहाँ पे भी एक डिस्क बनेगी, देखो इस तरीके से, यहाँ भी एक डिस्क बनेगी इस तरीके से, ऐसे डिस्क बनती जाएंगी अलग अलग वॉल्यूम्स की, उन सब के वॉल्यूम को ऐड करना है. सो वी हैव टू इंटीग्रेट दिस क्वांटिटी. नाउ हियर वेरिएबल इज y. ओके, सो this total volume is from this point to this point. Here we have x equal to 1, so y square equal to 1, so y equal to plus minus 1. So this point is y equal to minus 1 and this point is y equal to 1. So minus 1 से 1 तक y को वेरी कराएंगे तो सारी डिस्क का वॉल्यूम ऐड हो जाएगा. So here we will write y equal to minus 1 to 1. Okay, so we have to evaluate this integral which will give us the required volume. Clear? Now we know that whenever we have integral of the form minus a to a, we have to check whether integrand is even or odd. Here if we put minus y in place of y, it remains same, integrand remains same, so it is even function because y square है ना, तो even function ही बनेगा. So उस केस में limit will become from 0 to 1 and we will write 2 here. इसका डबल करेंगे और लिमिट 0 से 1 हो जाएगा. Okay, so we get twice of y equal to 0 to 1 and then pi और 1 minus y square whole square dy. So अब ये सिंपल सा एक इंटीग्रेशन है जो आपको सोल्व करना है. ओके बच्चों, सो पाई को बाहर निकाल सकते हैं यहाँ पे 2 पाई. ठीक है, अभी हम तो लिखते हैं यहाँ पे 2 पाई इंटू 1 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस y टू द पावर 4 माइनस इट इज 2y स्क्वायर. अगर हम a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएं और dy और y इक्वल टू 0 से 1. ओके, इक्वल टू 2 पाई इंटू, नाउ वी विल इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू y. सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज y प्लस integration of y to the power 4 is y to the power 5 upon 5 minus twice of y cube upon 3 and limit is from 0 to 1. Okay, so now if you put the limit you will get the required answer. So finally you are going to get option number B, 16 pi upon 15. Please check it. So B is the right answer. Okay students, so this type of problems, volume based problems, are important and different situations may be there. Okay, there may be a disk which we have to make about the y axis, okay, about the x axis or about any other axis. ठीक है, x axis के about, y axis के about या किसी और axis के about हम area को revolve कर सकते हैं and we can calculate the volume generated. Okay, so you have to prepare this topic in proper way, right? So we have more such questions in our this NPTEL assignment book. You will find that. Okay, so I hope this concept and this solution is clear to you and you can solve more such problems, and we will meet in the next class with some another question of NPTEL assignments. All the best.